And students, how are you all? I hope you all are safe and well at your home and you all enjoyed your holiday very well. Now just start and just focus on your study. After summer vacation, we are going to start our online class again, and today is your EVS class. In EVS, we had discussed 3 chapters before summer vacation, and today we are going to start our next chapter, chapter 4. Before starting our new chapter, we will just revise our previous chapter. In first chapter, we had discussed about family, types of family, and there are 2 types of family, joint family and small family. Joint family means बड़ी family. Joint family means जिसमें सारे people साथ में रहते, like grandparents, parents, uncle, aunts, siblings, cousin, they all are living together. This family known as joint. Joint means big. And next type of family, nuclear family. Nuclear means small. In this family, only parents and their child living together. This family known as nuclear family. A joint family can form 2 or more nuclear family. There are many reasons behind joint family breakdown into 1 and 2 and more than in nuclear families. All of us change as we grow. As we grow older, in our appearance, in our habit, many changes. And helpful and love make family happy. In family, everyone help each other and everyone sharing, caring for each other. This is the family. In next chapter, in second chapter, my extended family. Extended family, there are maybe some people, they are our relative, but they do not live with us. They are our extended family, means our maternal parents. They are also our relative. नाना नानी, पर वो अपने साथ एक घर में नहीं रहते, पर अपने रिलेटिव हैं. तो कुछ अपने ऐसे रिलेटिव होते हैं जो अपने रिलेटिव होने के बाद भी अपने साथ एक फैमिली में, एक घर में नहीं रहते हैं. वो फैमिली कौन सी होती है? एक्सटेंडेड फैमिली. एंड आवर इमीडिएट फैमिली मीन्स आवर पेरेंट्स, दे live us with us in same home. So this family is known as immediate family. One family tree. What is a family tree? Family tree show relations between all family members. And next, sharing and caring. Families share and care for each other. Next, in third chapter, we had discussed some animal lay eggs and some birth to babies for reproduction. Reproduction means produce their young ones. This process known as reproduction. A human baby stay inside mother's womb for almost 40 weeks. यानी टोटल 280 डेज के लिए जो ह्यूमन बेबी होता है वो मदर वूम्स में ग्रो करता है. आफ्टर 280 डेज मदर गिव्स बर्थ टू बेबी. A child who is brought home legally from an orphanage. Orphanage, a place home for children who do not have parents. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्फन चाइल्ड. और समटाइम्स क्या होता है, जो ये ऑर्फन चाइल्ड होता है उनको कोई लीगल तरीके से एडॉप्ट कर देता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एडॉप्शन. क्या बोला जाता है? एक अलग तरीका होता है फॉस्टर. फॉस्टर में भी उनको ऑर्फनेज से लाया जाता है, पर उसमें लीगली नहीं होता है, इसलिए उसको कौन सा बेबी, जो बच्चा ऑर्फन्स लीगली ऑर्फन से एडॉप्ट किया जाएगा वो होता है एडॉप्टेशन. और जिसमें लीगली नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं फॉस्टर चाइल्ड. दिस ऑल अबाउट आवर प्रीवियस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, फील. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट sense of touch, type of touch. There are 2 type of touch, good touch and bad touch. Sense of smell and differently able people. We have learned that in our body we have 5 sense organ: ear, eye, nose, tongue and skin, and they all help us in different sense. Like eye help us to see different things, nose help us to smell many things, bad smell, good
bitter, sour, sweet, and skin help us to feel. Our skin help us to feel, and these feelings can be warm, hot, rough, pricky, pain or ticklish. Whenever we touch some object, then we can know this object hot, this object cold. इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू अपन को सेंस होता है, किसी टच का सेंस स्किन के थ्रू. द स्किन इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स and there are nerves that end at the top of layer of our skin, and this help us to feel. जो अपनी skin है, there are many layers and on this layer one nervous, these nerves help us to feel of touch. Whenever we touch any object, this nerve will send message to our brain and our brain instruct us how to behave. For example, whenever if we touch any hot object, suddenly we will remove our hand from this hot object. Why? Because our brain instruct us behave like this. Different feeling make us behave differently. Pain make us cry and tickling feeling make us laugh. Certain area of our body may be more sensitive than the others. In our body, some parts and some skin parts is very sensitive. Next, be careful. Why should you be careful? Because do not touch hot object, and next, do not touch pointed object. If what will happen if we will touch hot object and we will touch pointed object, we will get injury. So do not touch hot object and do not touch pointed object like needles, spines, thorns, and be careful while touching or handling sharp object like knives or blades. Then now you understood our skin, how our skin help us to feel different type of touch in our skin. One nervous, और ये nervous क्या करता है, एज ए सेंसर की तरह वर्क करता है, और जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को या कहीं पर टच करते हैं तो ये नर्वस किसको मैसेज करता है, ब्रेन को, और ब्रेन अपन को इंस्ट्रक्ट करता है, ब्रेन अपन को बताता है कि आपको क्या करना है. और ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत विदिन सेकेंड हो जाता है, अपन को नहीं पता चलता, पर ये पूरा इतना प्रोसेस होता है. नेक्स्ट, गुड टच एंड बैड टच. गुड टच और बैड टच, व्हाट यू मीन बाय दिस? There are different type of touch. A certain type of touch tell us about our feeling. Sometimes because of touch we can know feelings. Means a certain type of touch tell us about our feeling. If we feel comfortable and if we feel safe from anyone touch, then we can say it's good touch. कभी कभी क्या होता है, जो एक अपन में एक होता है कि उसके थ्रू अपन पता कर पाते हैं कि जो ये टच है वो कैसा है, बैड टच है या गुड टच है. एक सर्टेन टाइप का जो टच होता है जिससे अपन को अनकंफर्टेबल फील होगा या फिर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, सेफ फील नहीं हो रहा है, वियर लग रहा है, तो मीन्स दैट इज अ बैड टच. There are different type of touch. A certain type of touch tell us about our feelings. A hug, holding hands, and a kiss on the cheek are example of type of touch. When our parents care or hug us, and we feel good, and we feel comfort, we feel safe with our parents. But sometimes when a stranger and unknown person touch us, we feel uncomfortable and unsafe. This is bad touch. Always remember, you can know whenever any stranger or any unknown person touch you that this touch will make you uncomfortable and unsafe. तुम्हें उससे weird feelings आएगी, तो वो फील कौन सा टच होता है, बैड टच. और अगर अपन को पेरेंट्स अपने ब्रदर सिस्टर जब अपन को टच करते, हग करते, कि अपनी केयर करते, तो उससे अपन को कंफर्टेबल फील होता है, तो वो टच कौन सा होता है, गुड टच. You should be careful about touch also. You can know this is bad touch or this is good touch. If any stranger, a
a visitor or a friend or relative touch you, hits you or say something that make you feel unsafe or uncomfortable, tell your parents immediately. अगर तुम्हें कभी भी ऐसा फील हो and from anyone touch you feel uncomfortable, unsafe, just tell your and just inform your parents. तो अपन को किसको बताना चाहिए? अपने पेरेंट्स को. अगर तुम्हें लगे कि जो सामने वाला टच कर रहा है वो तुम्हें सेफ नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तो जस्ट अपने पेरेंट्स को जाकर उसके बारे में इन्फॉर्म करो. इफ अ स्ट्रेंजर or friend or a relative touch you somewhere where you do not want to be touched, tell your parents immediately. और कोई अगर तुम्हें गलत जगह टच करे या फिर उस टच से तुम नहीं चाहते हो तुम्हें टच करे, फिर भी वो टच करे, तो जाकर अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली इसके बारे में इन्फॉर्म करो. योर बेस्ट फ्रेंड और योर कजिन में होल्ड योर हैंड्स एंड प्ले विथ यू, बट इफ हीज और हर touch make you uncomfortable, tell your parents immediately. Sometimes it can your relative or your cousins also, from their touch also you feel uncomfortable, unsafe, then also you tell your parents. Remaining portion we will do in next class.